Hi Shubham, how are you? Shubham, you are from which school? May I know? Am I audible, right? You can unmute yourself, no problem. Hi Jane Vichitradurga, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? This is not Sam. This is Sham. Sam तो समन्वित है. Then how's the preparations are going on? Actually, people are leaving from 20th, no? Just few minutes, guys. We'll start our session. Voice ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ?
Okay, that's great. That's great. Oh, hello. Hi, Rutuja. I'm seeing here JNV Chitradurga from 2 accounts. No. Actually, Sam is actually for someone with in physics. One more faculty is there. Before coming here, me, someone with is engaging you people, right? We'll call him as a Sam. Okay, yes. That's good and that's great also. We'll start our session, guys. Okay, no need to make it delay. We'll take a quick recall and we'll start. Yes, once again, welcome to all of you to my class. Yeah, shut up. Okay, today's class is all about heat and thermodynamics. Successfully, we completed the gravitation chapter, right? I hope everything is clear there. Try to solve the more numericals, or if you are getting a previous year question means, okay, try to take a MTG textbook, okay, or try to purchase it one when you reach your home, and try to solve each and every problem which are coming in that NCERT means this नीट टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होता है ना, उसको सॉल्व कर लो. You will get an idea about it. Okay, don't delay it. Okay, soon after you reaching your home, try to purchase one previous year book which is contain previous year question paper which will become you people guys know, I think JEE and as well as NEET papers होता है ना, उसको solve करो chapter wise, right? Okay, today's concept in heat and thermodynamics, basically temperature scales. Actually, yesterday I started with the introduction only. Today I will explain briefly what will be the temperature scale and how we are going to measure the temperature with the different temperature scales. Okay, and later on we'll be talking about the expansion of material. Cool. How the expansion of material will be takes place, giving a heat to the object. Guys, do you know what is this? Do you know what is this? Before starting the session, I want to know. Do you know this one? Here arrow mark है ना, a wheel. किधर लगाते हैं इसको? Where we will keep this wheel? Yes. Good evening, Bellary guys. Yeah. May I know where we will keep this one? Did you saw this one anywhere in your village? Ox cart होता है ना? Cart में होता है ये wheel. Right? Tanga cart. उधर लगता है. Guys, whether you are observe this cart carefully, हाँ bullock cart. क्या है ना, एक cart है ना, it is actually made by wood. This is completely wood होता है. इसके surface में क्या होता है? Metal होता है. Metal means iron होता है. Correct ना? But this metal strip is not a complete one. It is not complete strip. Actually, once you go through it, 3 or 4 इसको जोड़ता है ऐसे. Cutted piece they are. Okay, ये दोनों को बीच में थोड़ा गैप रखता है. Do you know why? बीच में they actually basically cutted piece. Round होता है ना, एक cutted piece को join करता है. And moreover, वो cutted piece के दो पीस होता है ना, देखो इसे, एक पीस ऐसा है, ओके, दूसरा पीस ऐसा है, मींस ये दोनों को बीच में स्मॉल गैप देता है while making this one. Do you know why? Think करो.
I will tell you why. Today's topic is all about based on this one only. Okay. Okay, we'll start the class. Yesterday we started with the heat and temperature. Correct na? Heat क्या होता है? Actually, it's an energy, form of energy. It carries the energy from one portion of material without actual movement of a molecules. Correct ना? It's a non-mechanical transfer of energy. बोल दिया था मैंने. क्या है? Non-mechanical वाला. Correct na? If it is mechanical means then we call this one as an work done, right? When it carries the heat from one point to another point, okay, substance में एक changes होता है, correct ना? We call that one as this change in heat को calculate करने के लिए हम बोलते हैं temperature. Measurement करने का तरीका है वो temperature. Clear है ना? Next thing what we discussed yesterday, I explained this all the things, and if it is heat will be transfer, we know that it will be transfer always from hotter end to colder end. मान लो this is 40 degree Celsius, this is 30 degree Celsius, means 40 से 30 heat आता है. When we joined each other while traveling, wheel gets heated from. Yes, exactly right answer, okay. And after soon joining this one, okay, the temperature of both the metals will become equal. Okay, we call that one as an equilibrium condition also. And next, this is a thing that actually which I didn't explain. Actually in thermodynamics आता है, इसको हम कहते हैं कॉफी कप को हम कहते हैं सिस्टम. क्या बोलते हैं हम? सिस्टम बोलते हैं. Actually if you are going to keep the coffee inside, means it is a hot coffee मान लो, which is actually kept on the table. Just imagine like that. Okay. After certain time, if you may be observed, this hot coffee will become very cool within a short period of time. Correct na? Because either surrounding hai na, this is all surrounding apart from the coffee cup. Here heat will be exchanged from higher potential region to lower potential region. Hot region से cold region जाता है. That's why heat is actually exchanged to the surroundings from the all the point. Exchange हो गया. Temperature कितना था surrounding में, उतना temperature को cool down हो गया. Clear ना? Or else you may be observe Coca-Cola. Just take a Coca-Cola which is actually kept inside the fridge. Fridge के अंदर था, बहुत ठंडा था. Now you keep this cola on the table. Table के ऊपर रख दो. After a certain time, this cola is initially very cold. Now it will become warmed up. Warm up होता है. Do you know why? Again same thing. क्या होता है इधर? Heat will be exchange होता है. इधर heat बहुत कम था. Heat is very less. Correct ना? But surrounding का heat क्या होता है? इसके अंदर घुस जाता है. Surrounding से. That's why the cola will become warm when we keep that cola in a normal temperature. This is all about one more thing, transfer of heat. And we started the thermometry also. Thermometry क्या होता है? Actually basically it's a branch of physics. Thermometry means it's a branch of physics. इधर क्या करते हैं हम? Actually we are measuring the temperature of the substance. Substance का temperature होता है ना, उसको measure करते हैं हम इधर, उसको हम बोलते हैं thermometry. Or else you guys know, right? Thermometer. क्या होता है thermometer? Actually, basically, it is a device. Thermometer. We are using that thermometer to measure how much the body is hot or cold. How much? लिख दो इसको, कोई problem नहीं. How much? क्या हो गया? हाँ, how much the body cold or heat? We need to measure this thing, no? That's why we are using a special device. We call that one as an thermometer. Clear, right? And you might be observed here, guys. Actually, आज का topic यही है, temperature scales. Means thermometer में temperature इसको बोलता है thermometer. Okay, इधर इसमें क्या measure करते हैं हम? Temperature measure करते हैं. Temperature को measure करते हैं हम. Okay, a temperature scale always will be not same. Different device में different होता है, right? If you are using the thermometer in a school, mean okay,
just imagine that thermometer is completely different from this one. Actually, your doctors are using, no, right? In that, just imagine doctors which are using the thermometer, which is exactly different than the our laboratory thermometers, right? What I'm saying, are you understanding, right? Okay, no problem, cool. Example देना है. Okay, guys, if you are measuring the temperature of your body means by using the laboratory thermometer, what will be the temperature approximately you will get of your body? बॉडी में कितना टेम्परेचर आप मेजर करते हैं? Approximately, I need answers. Yes, good. I got one answer. Yeah, around 37 to 41 degree. Usually we will measure. Correct na? But idhar dekho. Actually, this doctor is measures. Actually, I zoom this one. Okay. इधर क्या देख रहा है? इधर 98.3 दिख रहा है. हाँ, yes, 9999. 300 Fahrenheit. No, just keep that value. Rutuja, okay, that's good. Ballari guys, keep that value what you typed there. Okay, I will give the exact feeling of it. Okay, today here it is showing 98.3. I want to know this one. If 98.3 degree Celsius hota to degree Celsius hota hai, commonly we are measuring the temperature degree, no? If it is degree Celsius means हमारा body का temperature 98 degree Celsius होता तो is it possible to live? Highly impossible. Correct na? If you are going to cross more than 42, if the temperature of a human body crosses more than 42 degree, we say it is an high fever. High fever hota hai. If it is crosses 42 also, there is a chance of death of the human, right? What I'm saying, then what is this then? 98.3. From this point I can say this is actually not what we are thinking degree Celsius. This is not a degree Celsius, it's a kind of another scale only. Correct na? हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, आप बोल दिए थे 37 डिग्री सेल्सियस. इसको ए डिवाइस कन्वर्ट करके 98.3 में दे रहा है. बट इधर देखो, आई विल एरेज एवरीथिंग. जस्ट इधर देखो, इधर कुछ दिख रहा है ना? क्या है? यस, गुड. Actually, yes, good guys. It's a Fahrenheit. It is not degree Celsius. Degree Celsius not. It's an Fahrenheit. It's an another scale. Right? What I'm saying? Like different scales होता है temperature measure करने के लिए. वो scale का introduce मैंने करता हूँ आज. कैसे calculate करते हैं? If it is okay, human body 37 degrees Celsius, it will be shown by the laboratory thermometer. Means this Fahrenheit thermometer, how much degree Fahrenheit it will be shows. Okay, I will exactly explain this one today. Okay, stay calm. If you're getting any doubts in between means ask me. Cool, no? हाँ, आता है first वाला different scales आता है इधर. Yesterday I explained this one also. Actually, basically we are explaining this different scale based on the ice point of water and as well as the boiling point of water. ये दोनों point पर explain करता है. इसको एक्सप्लेन करने को, डिफरेंट स्केल्स को एक्सप्लेन करने को हमको सेल्सियस स्केल पता होना चाहिए. नॉर्मली वी आर यूजिंग द सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल में ice will be melted or ice will water will be in ice form means it will show 0 degree centigrade. कितना शो करता है? 0 degree centigrade शो करता है. You guys are nailed it. Okay, I will explain today how the formula will come. I want to deliver this content to everyone. No, few of them are not don't know. एक क्वेश्चन आता है इधर से, that's why. Right? Boiling point of water. Same water, if you're going to check the boiling point from this device means it will show the boiling point at 100 degrees centigrade. This is the first one. Note down this one. Celsius में ice point कितना होता है? 0. Boiling point 100 होता है. ये दोनों को बीच में कितना यूनिट्स लगता है ना? स्केल में यूनिट्स होता है ना? लाइंस. It will be around 100 होता है. 100 यूनिट्स. ये पहला स्केल है.
सेकेंड स्केल इज वी कॉल्ड केल्विन स्केल. ओके, केल्विन स्केल में सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है. ओके, कॉन्सेप्ट सेम है. इफ यू आर गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ आइस बाय द केल्विन स्केल मींस इट विल शोस 273.15. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल्सियस ने 0 बोल दिया था. सेल्सियस एक्चुअली इट्स अ साइंटिस्ट नेम. केल्विन आल्सो साइंटिस्ट नेम. ही actually invented new scales. That's it. New temperature scales को invent किया है इन्हें, right? And then the boiling point of water will be in a Kelvin scale. It shows 373.15 Kelvin में था. ये दोनों को बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 100 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है. दो स्केल का इंट्रोड्यूस खत्म हो गया, right? No. And we will come to the next scale. Next scale we called Fahrenheit scale. कौन सा है? Fahrenheit. Fahrenheit also a scientist. इसका नाम के ऊपर एक स्केल बोल दिया हमको. Okay. Now Fahrenheit scale में ice point. If you are going to put this one in touch with the ice means इसका टेम्परेचर शो करता है Fahrenheit में 32 यूनिट्स का शो करता है. It is started from 32 units. And boiling point of water होता है ना, वो होता है इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में. Are you my point? And ये दोनों को बीच में होता है ना यूनिट्स, 212 minus 32 around 180 यूनिट्स आता है. Why 32 only, sir? Actually, it is discovered by the Fahrenheit. No, I don't know exactly the relation. Why he kept 32 only and Kelvin? Why he kept 273 only? Actually, thermodynamics में आता है. Kelvin को आंसर मिलता है हमको. Thermodynamics में Kelvin को आंसर मिलता है. Why we are taking 273 only? But Fahrenheit को सर्च किया मैंने गूगल में, but मुझे नहीं मिला. Okay, I will try it, and tomorrow means in the next class I will explain why he took 32 only. Clear है ना? Okay, done. It Fahrenheit का हो गया था. Next come to the last one, that is for this for you guys, Roomer scale. Roomer scale में ice point होता है guys. Ice point will be exactly similar to the Celsius scale, 0 degree. Okay, and boiling point of water होता है around 80 degree में. Okay, this is all about the introduction part. Already I told you guys, if human body का temperature 37 degree show कर रहा है, doctors are explaining that one with the help of Fahrenheit scale. Then what will be the Fahrenheit temperature with respect to 37 degrees Celsius? We need to calculate. Meanwhile, we need to convert डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर मिला था ना, उसको फारेनहाइट स्केल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ओके, आई विल टेल यू ए ट्रिक टुडे. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. नो नीड टू बाय द फॉर्मूला आल्सो. ओके, फॉलो दिस वन. कैसे? मान लो कन्वर्शन है, किधर से किधर तक कन्वर्शन, केल्विन को. ओके, पहले केल्विन विल डू, आफ्टर देन विल डू फारेनहाइट. ठीक है ना? सेल्सियस में Kelvin ice point 273, boiling point 373 D. I'm not taking the point. Okay, it's a minute. No worries. इधर conversion करना है, किधर से किधर, Celsius के Kelvin. When we are doing this one, no, लिख दो इधर. This point we called ice point. This point we called boiling point. केल्विन का पॉइंट इधर है, बॉइलिंग पॉइंट वाला. दिस इज वन आइस पॉइंट वाला. फार्मूला कैसे आता है सोच लो. इधर सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट कर रहा हूं मैंने, सेल्सियस से केल्विन. इधर सेल्सियस में सेल्सियस वैल्यू आई नीड, और एल्स ओके मान लो केल्विन का वैल्यू आई नीड इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस. मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर. What is the Kelvin we required? Means Kelvin का वैल्यू पता करना है, right? Kelvin का वैल्यू पता करना है. Take Kelvin here first. Kelvin minus इसका ice point लिख दो इधर.
किसका, केल्विन का आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय, इधर टेम्परेचर स्केल यूनिट होता है ना, किधर से किधर तक वेरी हो रहा है, इधर वेरी हो रहा है 273 से 373, ये दोनों को डिफरेंस ले लो, मींस बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, किसका, केल्विन स्केल का, दिस वैल्यू एक्चुअली इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वी नीड टू इक्वेट दिस वन, सेंटीग्रेड, किसको इंटीग्रेट करना, इक्वल करना है, सेंटीग्रेड को इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया तुम, राइट हैंड साइड में भी वही करो, मालूम हो रहा है ना, इधर डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट मीन्स लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय कैसा ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಟೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that's it. If you know this one means everything will become automatically. k c को k कन्वर्ट करना है हमको, मीन्स डिग्री सेल्सियस से केल्विन, क्या क्या करना है, केल्विन माइनस आइस पॉइंट लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, बीपी माइनस आईपी, सिमिलरली डिग्री सेल्सियस माइनस आईपी डिवाइडेड बाय बीपी माइनस आईपी, डिफरेंस लेना, ठीक है ना। नो देखो इधर k माइनस लोअर पॉइंट कितना है, k में लोअर पॉइंट है 273, लिख दो इधर 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका 373 माइनस आइस पॉइंट 273 इज इक्वल टू इधर डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या है आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 रख दो इधर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिग्री सेल्सियस में 0 सॉरी 100, आइस पॉइंट है 0, ठीक है ना। अप टू दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन, आई होप। If you had any doubt means please drop your doubts in the chat box. ये सेकेंड स्टेप था। ओके थर्ड स्टेप, नेक्स्ट वन होता ना बहुत स्पीड से करता हूं मैंने इसलिए बोल रहा हूं। ओके इधर देखो k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 मीन्स 100 होता है, इधर c डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये माइनस 273 को इधर लेके आना, then k will becomes out to be c degree centigrade plus 273, right? This is the equation. Actually you people are using this equation since from a long, right? chemistry में कब आपको lab practical start होता है उसी दिन से start होता है इसको use करने वाला, right? Now already I told you that 27 डिग्री को केल्विन में क्या बोलता है पूछा था मैंने, रख दो इधर, k value will be 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, आंसर कितना आता है 300 केल्विन आता है, राइट। मींस इफ laboratory temperature measures the temperature value 27 डिग्री सेल्सियस मींस केल्विन स्केल में वो कितना होता है 300 डिग्री 300 केल्विन शो करता है, क्लियर है ना। Hope it is understood to everyone. Let me know in a chat box quickly. I'm asking everyone. Yes, good Ballari. Chitradurga, Rutuja, Komala, Sakshi. Yes, that's great. That's great. Good. Good. हे हो गया करेक्ट ना। नेक्स्ट विल मूव टू दी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना ये, हाँ सेल्सियस में कितना 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके सेल्सियस में लोअर पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट था 32 and then boiling point था 212. Now we need to convert Fahrenheit Celsius to Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit convert करना है, Fahrenheit को convert करना है means first लिख दो Fahrenheit का values,
Fahrenheit minus lower point, ice point 32 divided by, and then higher point means boiling point 212 minus lower point the 32 is equal to, इसको किसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को. अगेन सेल्सियस minus 0 means lower point divided by higher point, boiling point सेल्सियस में 100 डिग्री minus lower point था 0, and again Fahrenheit minus 32 divided by 212 minus 32 means it will be around 180. ऑलरेडी मैंने बोल दिया ये दोनों के बीच में 180 यूनिट्स होता है, 180 यूनिट्स होता है ये दोनों के बीच में, राइट, इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट ना. 0 0 कट गया, 2 5 जा 2 9 जा, इधर 5 है इधर 9 है. I will multiply, cross multiplication कर रहा हूं, 9 will be comes to the right hand side, then F minus 32 is equal to C into 9 divided by इधर 5 है, राइट, एंड देन माइनस 32 है, इसको राइट हैंड ले रहा हूं मैंने. देन फ़ारेनहीट का वैल्यू कितना आता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, C into 9 by 5, C into 9 by 5 माइनस 32 राइट हैंड साइड से आने के लिए प्लस 32 होता है. क्लियर है ना. देखो, इफ यू आर रियली forget the formula in exam means no need to worry about it. कन्वर्शन करना बहुत आसान है, किधर से किधर तक कन्वर्शन करना है. इफ इन केस सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्ट करना है मींस फर्स्ट लिख दो फ़ारेनहीट माइनस लोअर पॉइंट लिख दो उसका, एंड अपर पॉइंट लोअर पॉइंट का डिफरेंस लिख दो, राइट हैंड साइड भी वही कर लो, आपको आंसर मिलता है. करेक्ट ना. C stands for here degree centigrade. Now tell me, if 37 degree Celsius is a room temperature in Celsius scale means in Fahrenheit इसका scale कितना होता है. I will give you exactly 30 seconds or 1 minute time. I want answer from everyone. Fahrenheit में 37 degree Celsius को क्या बोलते हैं. Hey, got it. Excellent, excellent. Next. गुड गुड. ओके. अरे यार, हाँ चेक करो एक बार, चित्रदुर्गा 493 कैसे आता है यार. चेक करो, चेक करो, चेक करो. एक डिग्री सेल्सियस कितना आ गया था, 37 इंटू 9/5 प्लस 32. करेक्ट ना. ये 5 से डिवाइड करो 37 कितना आता है. देखो चेक करो इसको, 124 आ रहा है क्या. let me try once. इतना ज्यादा आ गया क्या. 37 divided by 5 into 9 plus 32, 98.6 आ रहा है मुझे. फ़ारेनहीट का वैल्यू कितना आ रहा है, 98.6 फ़ारेनहीट आ रहा है. चेक करो. हाँ, नाउ इट इज करेक्ट. 98 आर इक्वल टू 99, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियर है. राइट नाउ यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. उधर डॉक्टर साहब ने क्या किया था, 98 शो कर रहा है. करेक्ट ना. 98 मीन्स इट इज नॉट अ डिग्री सेंटीग्रेड. इफ इट इज शोइंग 98 मीन्स इफ डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमन बीइंग को जिंदा रखने के लिए चांस नहीं है. ह्यूमन बॉडी विल ऑपरेट within 43 degrees Celsius only, right? If you reach 42 also, you will be feel like that, yeah, it's an fever time. Clear है ना. अच्छा है. Hope it is understood to everyone. Next degree scale को आता है.
ओके, इधर कौन सा होता है डिग्री सेल्सियस से रूमर। मुझे बोल दो अब रूमर का आंसर क्या आता है। आई विल ऑल्सो डू, ट्राई टू डू इट एंड लेट मी नो द आंसर। यस जेनवी बलारी गाइस, गुड। अगेन सेम है, आई विल ऑल्सो डू, ट्राई टू डू बिफोर आई डू। ओके, आइस पॉइंट था 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था 100 डिग्री इन सेल्सियस। रूमर स्केल में 0 डिग्री टू 80 डिग्री होता है, करेक्ट ना। आई नीड टू कन्वर्ट सेल्सियस टू रूमर नाउ, राइट, दैट्स व्हाई रूमर माइनस रूमर डिग्री के टाइप पे होता है। ओके, 0 लोअर पॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी बिकम 80 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 0 c माइनस 0 0 होता है डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 100 ही होता है डिफरेंस, करेक्ट ना। 0 से 0 चला गया, करेक्ट ना। एंड देन इधर r इज इक्वल टू 8c बाई 10 आता है, 2 4 जा 2 5 जा मीन्स रूमर स्केल में c इंटू 4 बाई 5 आता है। क्लियर है ना। मैंने वैल्यू नहीं दिया भाई बल्लारी। ओके, आई थिंक यू गाइस आर टेकन लाइक दिस, 27 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, correct na, this is rumor scale. Now I hope if any question will be come from this part you will answer it। 37 को ना, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बल्लारी में 37 42 डिग्री सेल्सियस से कॉमन नो यू पीपल, फॉर मी in our area 27 degree celsius if we reach means if we cross 27 to 30 means we definitely we can't able to sustain, that's why 27 degree celsius is our laboratory condition here। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। कन्वर्शन फ़ारेनहाइट का हो गया था ना, यस हो गया था। और एक बात बोलता हूं आपको गाइस, देखो ये भी क्वेश्चन आने का चांस था है। इधर 0 डिग्री है, इधर 100 है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 32 से स्टार्ट होता है, 212 में बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये दोनों को बीच में 100 यूनिट्स होता है, ये दोनों को बीच में फ़ारेनहाइट में 180 यूनिट्स होता है, करेक्ट ना। हियर इन डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 1 यूनिट मीन्स इधर से इधर तक 1 यूनिट है, जस्ट मान लो ये 1 यूनिट राइज होने से इधर इधर फ़ारेनहाइट में कितना यूनिट राइज होता है पूछता है so many times, or else the question will be appear like this, in degree centigrade the point which is showing 30 units, किधर डिग्री सेंटीग्रेड में 30 यूनिट्स शो कर रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा यूनिट में होता है वो टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट में। ट्राई कर लो इसको एक बार, क्वेश्चन मालूम हो गया ना क्या पूछ रहा हूं मैंने। नहीं wrong, Rutuja around came but you converted Rutuja, actually what you did know you converted that one, I think 30 को कन्वर्ट किया है। आई एम नॉट आस्किंग द डिग्री सेंटीग्रेड, ओके इधर 30 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, आई विल मानते हैं। इधर फ़ारेनहाइट में 86 फ़ारेनहाइट होता है, आई विल अग्री विद दिस वन, ऑब्वियसली आई विल अग्री। आई एम सेइंग इधर 30 यूनिट्स, आई एम सेइंग दैट देखो इधर दिस इज 30 यूनिट्स आ गया, इधर तक 30 यूनिट्स हो गया है। फ़ारेनहाइट स्केल में इधर कितना यूनिट्स कवर करता है। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, देखो एक बार सिंपल है, देखो यूनिटरी मेथड पता है ना आपको, डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों का डिफरेंस कितना होता है 100 होता है, 1 यूनिट 100, ये इक्वल होता है फ़ारेनहाइट स्केल में 180 को इक्वल होता है,
180 को इक्वल होता है। मींस इधर 1 यूनिट का वैल्यू, इधर 1 यूनिट राइज करने से डिग्री सेल्सियस में इधर कितना होता है, 1.8 यूनिट राइज होता है, 1.8। ध्यान से सुनो, डिग्री सेल्सियस, दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री सेल्सियस में 100 यूनिट्स होता है टोटली, फ़ारेनहाइट में 180 होता है। डिग्री सेल्सियस में 1 यूनिट राइज करने से फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 1.8 राइज होता है, करेक्ट ना। इधर आई एम सेइंग हियर 30 यूनिट्स राइज हो रहा है, मींस 30 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैंने, इधर 1.8 को 30 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, यूनिटरी मेथड था ना, कितना हो गया, 18 इंटू 3 मीन्स इसको हम, हाँ 18 इंटू 3 54, 54 यूनिट्स राइज होता है किधर, फ़ारेनहाइट स्केल में। I got it. Yes, right, you guys are nailed it. Amazing. Okay, cool. We'll come to the next important topic of the day, thermal expansion. मैंने बोल दिया था, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस भी किया था, एक व्हील लेके, करेक्ट ना। मान लो दिस इज वन रॉड, ये क्या है, रॉड है, इसका लेंथ है L, लेंथ कितना है, L है। What I will do, I will supply some amount of heat to this one. Heat को in physics we are representing the heat quantity with Q. Okay, heat दे रहा हूं मैंने, heat देने के बाद क्या होता है, देखो वही रॉड, उसका लेंथ थोड़ा एक्सटेंड हो गया, क्या होता है, एक्सटेंड होता है। We call this process as an thermal expansion. Thermal expansion means it is very simple. If you give the heat to the any substance, if you give heat to any substance, substance will get expand, substance will get expand. This process we call as a thermal expansion, right? Okay, देखो इधर, this is the original length L. Okay, after giving heat इधर extra length भी आ गया, I will call this one as an DL. I will call this one as an DL. छोटा सा एक्सपेंशन होता है, बहुत बड़ा नहीं। If it is 1 meter means बहुत छोटा सा होता है। I will explain that one also, no worries. Okay, we call this one as an, here what kind of expansion हो गया, may I know whether it is a linear or volume expansion or aerial expansion? expand हो गया, linear one. Okay, I will ask one. देखो, this is rod, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रॉड है। ओके, इसको मैंने हीट कर दिया, I will supply the heat to this rod. Okay, if I supply the heat to the rod means whether this rod will be expand only in linear, means it will be expand in linear portion only, volume area expansion नहीं होता है क्या? What about volume? Volume भी इंक्रीज होता है ना, एरिया होता है इधर, ये एरिया भी इंक्रीज होता है। हाँ, then whether okay, now yes, of course, according to your answers, then whether if I have to confirm this one as a linear expansion or aerial expansion or volume expansion. Actually, I will give you an example. You might be see this scenario in your village area. पोल टू पोल इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, पोल टू पोल इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, राइट ना। इन विंड एंड ऑब्जर्व दिस इलेक्ट्रिक लाइंस वर वेरी स्ट्राइट लाइंस के तरह दिखता है, बट इन समर सीजन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, एक्चुअली दे आर जंक्ड, राइट ना। इट आल्सो टेक लाइक द लीनियर एक्सपेंशन, बट उसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड होता है, सरफेस भी एक्सपेंड होता है, बट क्या है ना, कंपेरेटिवली लेंथ expansion, aerial expansion and as well as the volume expansion are very minute,
what we can say, length expands more. Okay, just a minute. Length expands more comparatively area and volume. दोनों का expansion very less होता है, but yes, significant is only length. Length is significant. That's why we are taking linear expansion for a rod or a wire. अरे यार, नेटवर्क प्रॉब्लम, सैटेलाइट नेटवर्क नहीं भेज रहा है मुझे. सैटेलाइट और मेरा नेटवर्क फोन का बीच में क्लाउड्स आ गया बहुत आज. हाँ, yes. I will repeat it again. Comparatively length, area and volume expands very less for these two conditions. Okay, that's why we are treating this one as a linear expansion. And today, in the beginning, very beginning only, I told you that a bullock cart होता है ना, right? A cart में क्या होता है, ring. It will be not a complete ring. Actually, it is a piece of ring. Why we are using that piece of ring means like this. Pieces we are using means, wait, either a pieces we will use like this. 3 piece or 4 piece we will use in a one single wheel. Why means when these wheels are rotate road, when they are moving in a road, बहुत फ्रिक्शन होता है रोड एंड एज वेल एज दी व्हील के बीच में. ये फ्रिक्शंस के वजह से क्या होता है, इसके ऊपर डालता है ना मेटल, वो बहुत हीट होता है. हीट होने के वजह से क्या होता है, metal will start to expand. When it will be start to expand, if we are not giving a space between a two metals means क्या होता है, वो metals बाहर आ जाता है. बाहर आ जाने से there is a chance of breakdown of this wheel also. Okay, breakdown is a too much of risk. We can say it will not give a proper rotation that time. Bahar aa jata hai. That's why we'll keep a small gap. And if you people observe this one or not, I don't know. Usually I will travel to my hometown by rail only. Yes, definitely I will explain. Whenever I will go or railway station, no, I usually observe this one. First figure है ना, इधर देखो, ये दोनों ट्रैक होता है ना, और ट्रैक पे बीच में थोड़ा सा क्या होता है, जगह देता है. Okay, they will leave a small space between two rods, because when train will be moving on the railway track means tracks also get heated up. And also in a summer season, not in a normal season, in a summer season में क्या होता है, बहुत हीट होता है. Constantly these tracks will be getting a heat around 9 to 10 hours. 9 to 10 hours they will be in heat only. No one will go and give the shelter by the umbrella and whatever it may be for the tracks. Correct na? Right, what I'm saying? For a long time they will be under the sunlight, then they will be heated up very huge amount. When they are heated up means these two track will be expands. दोनों sides में क्या होता है, expand होता है. क्या हो गया इधर? Just a minute. Yes, my screen is visible, right, for everyone now? Is my screen is visible? Yes, that's great. Yeah, when this track will be expand, actually we are not giving a space here means क्या होता है, track will be like this, up होता है दोनों साइड में, push होता है ना, थोड़ा push होने से ऐसा up होता है. That's why it will not give a proper way to move the train. That's why when the railway track is building, that time they will give the small space between two tracks. Correct, due to linear expansion. Clear है ना? ए बुलॉक कार्ट का कहानी है क्या? अगेन ओके, ए बुलॉक कार्ट में क्या है, एक्चुअली बुलॉक कार्ट में इन अ टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या होता है, वी आर कीपिंग अ आयरन लाइक दिस. दिस विल बी नॉट अ कंप्लीट वन, इट शुड बी लाइक अ पीसेस. ये दोनों पीस का
पीसेस होता है ना, उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, थोड़ा सा जगह देते हैं उसको. We'll keep a small gap because when bullock cart is running on a road, it will be get heated up. Due to the heat, it will be expand some amount of length. Okay, if length will be expand means क्या होता है, they will be pushed each other, then there might be a chance of like this. मान लो, कैसे बोलना है यार, या this is one piece, this is one piece. Heated up means इसका लेंथ, दोनों का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से they will be move like this, right? That's why we'll give a short gap. That's it. We'll move to the next one. Okay, next का कहानी है, this is also expansion only. We call this one as a second one as an aerial expansion. कौन सा है, aerial, or else we can call this one as an superficial expansion. कौन सा, superficial expansion, we called aerial expansion. मान लो ये मेटल है ना, ये इसको हीट देता हूं मैंने, पहले इसका लेंथ था L, ब्रेड्थ था ये भी, आई विल कॉल B, दोनों था. आफ्टर गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इसका एरिया देखो क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, करेक्ट ना. इधर लेंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ आ गया, वी कॉल दिस वन एज एंड देन L प्लस DL, थोड़ा एक्सटेंड हो गया. ये ब्रेड्थ में भी थोड़ा लेंथ इंक्रीज हो गया, DB. Okay, usually we will write as an L plus DL only. For a different notation I used this one. Normally if I want to write means, previously it's a area था ये, इधर इसका एरिया क्या होता है, ये प्लस DA होता है. That's it. क्लियर है ना, दोनों साइड इंक्रीज होता है, in x axis and as well as the y axis also, and volume also increase होता है, but here we will take only to explain the superficial expansion sheets, metal sheets only we will take. Okay, metal sheets में ये लेंथ होता है ना, ये एक्सपैंड होता है, ये साइड का लेंथ भी एक्सपैंड होता है, बट थिकनेस है ना बहुत छोटा है, thickness is very small. That's why it is not a significant one. It is not significant. Only we will take area, right? And example के लिए आता है. Did you ever do this one? Do you know what the man is doing here? Actually, there is an medicine bottle, that one. Okay, medicine bottle which is actually twisted very tightly, बहुत टाइट ट्विस्ट हो गया है. उसको रिमूव करने के लिए क्या कर रहा है पता है क्या, ये पर्सन, ये बंदा क्या कर रहा है, वो लेड को हॉट वाटर के अंदर डुबा है. किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर. डू यू नो व्हाई, आई नीड आंसर फ्रॉम योर एंड. व्हाट विल बी द बेनिफिट इफ ही कीप दैट लेड इनसाइड द हॉट वाटर? What happens? It loses the cap. 4 cap expansion lose. Yes, now you are on a track. Correct ना? Actually, that lid क्या होता है? If it is metal means, okay, this lid will be expands in 2-dimensionally. वो तो expand होता है. वो thread होता है ना, thread के अंदर actually it will be tightened up. When it expands, increase होता है. इसका एरिया सेम होता है बॉटल का. एट द टाइम वी कैन इजीली रिमूव द लिड. क्लियर ना, ये एरियल एक्सपेंशन हो गया. कम टू द थर्ड वन, वॉल्यूम एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन तो हर जगह होता है यार, हर जगह होता है, राइट. वाटर इफ यू आर गोइंग टू हीट मींस वाटर का बूंदे भी एक्सपैंड होता है, करेक्ट ना. वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है देखो, इनिशियली इसका लेंथ था L, ये ब्रेड्थ था L, एंड ये हाइट है ना, ओके छोड़ दो, सभी का सभी साइड था L ओनली. ओके, वॉल्यूम क्या था इसका, V be its volume. We can write the volume as an L cube, करेक्ट ना. इधर ये सेकेंड में आफ्टर गिविंग हीट क्या हो गया, ये लेंथ L प्लस DL हो गया.
इसका भी लेंथ L प्लस DL हो गया, इसका भी लेंथ क्या हो गया, L प्लस DL हो गया। तीनों साइड लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वी कैन से हियर टोटल वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय L plus, sorry, not L. Again it came in my mouth. We can say this one as an V initial one, इसके साथ क्या हो गया, dV। क्लियर है ना, सेम ही है यार। एक्चुअली वॉल्यूम वी विल राइट एज एन L क्यूब। ओके, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख रहा है हम इधर, V प्लस dV। इधर कैसे आ गया देखो, L क्यूब मीन्स इधर क्या क्या आ गया, L प्लस DL। ऐसे 3 बार लिखना है हमको, L क्यूब है ना, राइट, दैट्स व्हाई L प्लस DL, L प्लस DL, ये तीनों जुड़ा के हम क्या करते हैं, L क्यूब प्लस DL क्यूब। L क्यूब स्टैंड्स फॉर V वॉल्यूम, प्लस DL क्यूब स्टैंड्स फॉर अगेन वॉल्यूम ओनली, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV। क्लियर है ना, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। वाटर एक्सपेंड्स नो, मान लो दिस इज अ बेसन, इसके अंदर वाटर है, वाटर का बूंद इतना था, means drop of water size will be this much only. When you supply the amount of heat to this water, water molecule absorbs the heat and इसका वॉल्यूम बढ़ गया, करेक्ट ना, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, hence it will be move upside and lower density molecules will be cover this place। ये प्रोसेस होता है हीटिंग में। क्लियर है ना, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, ऑल अबाउट linear volume means superficial and as well as volume expansion. I hope it is understood to everyone, right? This is volume expansion. Understood, right? We'll move to the next topic. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट वन, सिंपल सा है, बोलता हूं मैंने, मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, मीन्स लीनियर एक्सपेंशन को एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन को एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। We'll move, formula लिखना है, that's it. Before that I have a question, curiosity question. Okay, will all the given material expand same length for a given heat? I supply the given heat Q, this is metal A, this is metal B, this is metal C, will expand। okay, मान लो initially ये तीनों का लेंथ था 1 meter, each of the metal had a length 1 meter। okay, I supplied the amount of heat Q, then this all the metals will expand in a similar manner, means मान लो मेटल ये था कॉपर वाला, ओके, इसलिए इसका चेंज इन लेंथ इतना हुआ, इतना मीन्स 1 मीटर में 0.02 मीटर एक्सपेंड हो गया, मान लो सेंटीमीटर एक्सपेंड हो गया। Will the metal B also expand same? I told you metals are different, A, B, C. No, right? Because each metal has its own property of expansion, right? Each metal has its own property of expansion. Based on that, they will be expand. Okay, what are the property? What is that property? We need to understand. Basically I will explain there only। okay, इधर देखो, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं हम। लीनियर एक्सपेंशन में मान लो मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर वायर है, कॉपर वायर को हीट दे दिया, पहले एक कॉपर वायर था रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस में, आफ्टर गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट टू दिस वन, इट विल, पहला इसका लेंथ था L, कितना था, L था, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सप्लाइंग हीट इसका लेंथ चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, देखो इधर L प्लस DL, ये एक्स्ट्रा लेंथ भी आ गया। ये एक्स्ट्रा लेंथ किधर से आ गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्स्ट्रा लेंथ, क्यों आ गया एक्स्ट्रा लेंथ? हीट देने से, करेक्ट ना, when we supply the heat then only it will come, no, like this extra length आ गया, means इसके साथ साथ
इधर 27 था, maybe 30 degree centigrade it will be reach, or 28 degree centigrade it will be reach here. Means टेम्परेचर भी चेंज हो गया. टेम्परेचर चेंज होने के वजह से क्या होता है, लेंथ भी बढ़ जाता है. राइट, व्हाट आई एम सेइंग, राइट. मींस इधर dl है ना, चेंज इन लेंथ. ये चेंज इन लेंथ का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है अमाउंट ऑफ हीट व्हाट वी गिवन, और एल्स वी कैन से हाउ मच टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है. दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर, तो छोटा सा टेम्परेचर चेंज हो गया. दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर dt. हियर dl स्टैंड्स फॉर चेंज इन लेंथ. लिख दो इसको, चेंज इन लेंथ. dt स्टैंड्स फॉर चेंज इन कैपिटल T टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. ओके, एंड देन किसके ऊपर डिपेंड होता है पता है क्या, नेक्स्ट. एंड ऑल्सो दिस dl वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ आल्सो. इनिशियल लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है. दैट्स व्हाई आई विल राइट dl इज प्रोपोर्शनल टू l. ये दोनों इक्वेशन में dl के प्रोपोर्शनलिटी है ना. दैट्स व्हाई ये दोनों को मिलके, by combining these two equation, I will write this one, dl is proportional to l dt. L is nothing but initial length. Initial length. Clear है ना. And then this is actually not equal, proportional बोल रहा है. That's why to remove this proportionality, I will introduce one constant quantity for linear expansion. Linear expansion के लिए constant quantity लेके आ रहा हूं मैंने. क्या है वो, देखो, dl is equal to alpha. ये क्या है, alpha. I will tell you what is this. L dt. Alpha क्या है ना, it is actually we called coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion बोलते हैं हम इसको. मैंने बोल दिया था before this concept, different materials have different expansion capacity. मान लो this is copper wire. Copper wire है, कौन सा wire, copper wire. If I give q amount of heat to this one, means मान लो इसका ओरिजिनल लेंथ था L. ओके, इधर टेम्परेचर चेंज हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 डिग्री, मान लो 1 मीटर था कॉपर वायर. 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 मीटर में चेंज इन लेंथ कितना होता है ना कॉपर में. कॉपर में अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर होता है. इसका मतलब है 0.000, करेक्ट है ना, 017 मीटर्स. कितना में, 1 मीटर में इतना ज्यादा होता है कॉपर में. राइट, व्हाट आई एम सेइंग. If I am going to replace this copper by steel, steel लेता हूं मैंने, same 1 मीटर का, I will supply the heat and I will raise the temperature by 1 degree centigrade. ये steel कितना होता है पता है क्या, just it will be 1.2 into 10⁻⁻5 meter, means 0.0000012 meter in 1 meter. इतना इंक्रीज होता है. एंड नाउ लेट मी नो गाइस, कंपैरेटिवली स्टील एंड कॉपर, which one having a high expansion capacity? Which one will expand more among these two? I need answer. This is the last topic guys. I will complete this one. This is the last topic. जल्दी से जल्दी खत्म करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, which one having a high expansion? I need answer. Copper. Yes, cool. Means 1 degree centigrade increase करने से 0.00 means we can say 1.7 into 10⁻⁻5 meter expand होता है. Still just 1.2 होता है. Correct ना? This is actually, it is tells that these two are different materials.
एक्सपेंशन कैपेसिटी दोनों को सेम नहीं है. दिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी कॉल एज एन कांस्टेंट क्वांटिटी कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन कांस्टेंट, दैट इज अल्फा. क्लियर है ना? अब होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अल्फा बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल इन अ सेम टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ को एक्सपैंड करता है उसके वजह से, राइट? That's it. If you want to find out this alpha means take remaining two terms to left hand side. Then देखो alpha will be equal to dl. If it comes to denominator means L dt means change in length divided by original length. How much temperature is changed? This is the equation to find out the value of coefficient of expansion. It's also for linear expansion alpha, right? This is the equation. Don't forget, this is very important. And you also know they each and every time when we are solving the equation, we need to write the SI unit also. SI unit लिखना जरूरत है. DL means change in length. However, it will be length only. Length का SI unit होता है मीटर divided by again लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर. टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है इधर? एक्चुअली आई टुक हियर डिग्री सेंटीग्रेड और आल्सो यू मे बी टेक केल्विन आल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके, इफ आई पुट हियर डिग्री सेल्सियस मींस क्या होता है? मीटर मीटर कैंसिल होता है, देन डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. इफ इट इज कम्स टू न्यूमरेटर मींस पावर -1 होता है. करेक्ट ना? दिस इज व्हाट द एसआई यूनिट फॉर लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. Hope it is clear to everyone. Let me know in a chat box the things which I explained today. No, is it understood to everyone, right? This is all about today's class. I need responses, guys. I will be stay within the call around again 1 or 2 minutes. Okay, tell me in a chat box, is it understood to everyone, right? Are you there or not? I'm not getting any responses. कहाँ गया? मैसेज स्टक हो गया क्या? साक्षी, कृष्णा, ऋतुजा, कदम्बा, जैन विचित्रदुर्गा. Yes. Okay, I got it. Okay, then we'll meet in a next week, means Monday class में मिलता है. Okay, then take care. Bye bye. हाँ, test. I think, I hope tomorrow you will get a test. Okay, online test होता है. Those who will in a home, they will attend the test by home only, and those who are in a school might be you have to write the test. With gravitation के ऊपर होता है. ठीक है ना? Gravitation is completed once you go through the previous year questions. Almost all previous year questions में 60% आता है, 50 to 60%. Okay, chapter पूरा. If you know means definitely you will score a good marks there. ठीक है? Okay, we'll wind up this session up this point only. Yes, good. We'll see you in our next class. Until then.